आप स्टूडेंट्स हो या कोई शुरुआती जो YouTube चैनल शुरुआत करने के लिए सोच रहे हैं और अच्छे अच्छे कंटेंट वीडियो बनाकर कुछ लाभ कमाने के लिए सोच रहे हैं और भविष्य में इन यूट्यूबर्स की तरह बनने के लिए योजना है, पर एक स्टूडेंट या बिगिनर्स होने के नाते कम बजट में कैसे करूँ, कौन सी कैमरा या स्मार्टफोन लेना है, तो ये वीडियो आपके लिए है जो मेरे अपने अनुभव या एक्सपीरियंस को लेकर बनाया गया है। Hello everyone and welcome back to my YouTube channel zingxsu Diary. Before starting our today's video, I would like to take a time to thank especially those to my family members and many of my students out there who have been constantly supporting. Thank you so much. It means a lot to me. Your love and support give me the strength to pursue this journey and to come up with more videos. So thank you so much. Keep supporting in the future as well and be with me in this journey. And those who are new to my channel, welcome to my YouTube channel. Here you will probably get to see educational videos, lifestyle in rural areas, my daily adventures, not daily adventures but not so much of adventures, and I also upload some food videos in this YouTube channel. And to those who are new to my channel and have no idea about what's going on in my YouTube channel, in my previous video, I have created an opportunity for my students, especially the students who love singing. Therefore, I have conducted a singing competition. So it's going on and the results will be announced on this year's 14th November Children's Day. So therefore, do encourage them and stay tuned who will be the winner of this year's 14th November Children's Day singing competition contest. Therefore, do subscribe to my channel because more of these kind of videos will be uploaded in the near future as well. So in today's video, I'll be showing some of the gadgets which I have purchased recently, especially this microphone, wireless microphone. And apart from this, I have purchased some of the other gadgets which I will show you in this video. So without further ado, let us start our today's video. तो ये है मेरा गैजेट्स जो मैंने फ्लिपकार्ट ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से मंगवाई थी. This is a microphone which I needed the most. Most of my previous videos were made without using this microphone, therefore the audio quality was very poor. And many of my viewers were recommending me to get a microphone to have a better audio quality. Therefore I bought this cute microphone from CDs. And the most essential thing was the tripod which I needed the most. और ये ट्राइपॉड और ये स्टैंड से मुझे इतनी खुश नहीं हुई क्योंकि जैसे फ़ोटो और फ्लिपकार्ट में जैसे देखा था बड़ा करके ऐसा नहीं आया कि ये ज़्यादा ही छोटा वाला था. But still I will accept it. I won't return it. And the most fun thing is that getting this plastic bubbles plastic, क्योंकि इसको फटाने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन इस बार का प्लास्टिक फट गया वाला मिला. तो ये रहा मेरा ट्राइपॉड जो कि ज़्यादा ही छोटा है, बट स्टिल आई लव इट. देखने में क्यूट है, बट आई वाज होपिंग फॉर इट टू बी longer one. Up next we have is GoPro Hero 12 camera, which I will show you now. See the boxing, it's amazing. The packaging and the box itself is so organized and proper that I hope I won't ruin it. Therefore, I have to carefully cut it or else. Finally, it's done. Wow, it has another box. Wow, amazing. Let's unzip it. Okay. Wow, now you can see the parts. I have not only ordered the camera alone, but I have ordered the combo pack, which include camera stand, headgear, parts of camera stand, and I also got 2 batteries along with it. See, it is the camera stand, like a torch, seems like a torch. This is the part of camera stand, this one as well. And this is the battery. I got 2 batteries for the camera. That is pretty much good. See, this another camera, and this is the camera. See,
Here it says camera must be updated before the use. I have purchased or ordered this camera combo packs from an online shopping app, that is Flipkart, because most of the time I ordered or buy things from Flipkart only. So आप लोग भी Flipkart shopping app से ले सकते हैं ये कैमरा. It is very pretty and cute as well और portable भी है. आप लोग इसका प्राइस को Flipkart ऐप में चेक कर सकते हैं. ये है GoPro Hero 12 जो कि व्लॉगिंग और एडवेंचर्स के लिए अच्छा है कैमरा. पर ये कैमरा लेने के बाद और इससे अनबॉक्सिंग करने के बाद मुझे एक चीज़ पता चला है कि ये कैमरा को यूज़ करने के लिए आप एक्स्ट्रा एक्सटर्नल SD मेमोरी कार्ड लेना पड़ेगा, जो कि मुझे पसंद नहीं आई और मुझे लगता है कि ये इसका एक डिसएडवांटेज है. आई डोंट नो अबाउट द अदर्स बट आई थिंक दिस कैमरा हैज़ वन डिसएडवांटेज, क्योंकि मुझे ऐसा डिवाइस पसंद है जिसमें मैं सारा काम एक साथ कर सके. एंड मोर ओवर the camera quality of this GoPro is much lesser than as compared to some of the smartphone. This is it. So I hope you guys will choose or select your device carefully and wisely so that you may not regret after the purchase. आजकल सभी को पता है कि YouTube क्या है, YouTube से क्या कर सकता है, और आजकल ज़्यादातर स्टूडेंट्स, I see most of the students, their focus have been shifted towards making YouTube video and to becoming YouTubers. I mean सब लोग का सपना हो गया है YouTuber बनने के लिए, but it's not easy to become a YouTuber. You need lot of hard work, lot of skills, जैसे कि पढ़ाई में चाहिए. तो ये मैसेज उन लोगों के लिए है, especially those students who at the very young age are trying to become a YouTuber. Please kindly focus in your studies as well, because in order to become a YouTuber or to excellent in it, at least education basic knowledge होना चाहिए, especially writings, reading. साथ ही साथ अगर आपको YouTube वीडियोस बनाना चाहता है और ये आपका साइड पार्ट का पैशन है, तो you can do it, you can make videos and upload it. बट उसके लिए टाइम फिक्स रखना, और मैंने अपना स्टडीज टाइम टेबल और इस यूट्यूब वीडियोस और अदर थिंग्स के लिए टाइम बना के यूट्यूबर बनना चाहता है, तो सम ऑफ द बेसिक थिंग्स और नॉलेज ज़रूरी है इसके लिए भी. हम मैक्सिमम ज़्यादातर को इतना आइडिया नहीं होता है कि क्या करना चाहिए, कौन सा अच्छा गैजेट्स और डिवाइस यूज़ करना चाहिए वीडियोस बनाने के लिए, और कहाँ पर फाइनेंस करना चाहिए बोल के. तो do keep on watching this video till the very end, because जो हमने एक्सपीरियंस किया इन दिस जर्नी, हम उसका थोड़ा एक्सपीरियंस बताएगा, और I will give some of the ideas what to purchase, what not to, and what kind of device will be much more useful for you guys, especially जो students जिसके पास like those students who have little bit of budget, और वो लोग थोड़ा ये लो बजट से YouTube स्टार्ट करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए. Okay then, so let's start. Well, in order to make a YouTube video, first of all you need is simple thing you need is a mobile phone. Yes, जो सबके साथ available है, but that mobile phone should have at least a good megapixels which can capture a good quality photos and good quality of video. जो कि 15,000 to 20,000 के बजट के बीच में आ जाते हैं ऐसे टाइप का मोबाइल फोन. So I recommend you to take those kind of mobile phone that has a good megapixel features. You don't have to purchase a costly camera device. तुमको दामी कैमरा लेना ज़रूरी नहीं पड़ेगा. एक सिंपल मोबाइल जिसमें अच्छा मेगापिक्सल्स होगा उसको तुम लोग ले सकता है. And secondly, the phone which you have purchased, उसके फ़ोन में storage capacity थोड़ा ज़्यादा होने से ठीक रहेगा, or else you have to look for some laptops or some extra external memory card, तो उसको भी ध्यान में रखिए. And third is you have to purchase or you have to get a good microphone, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए अच्छा साउंड क्वालिटी भी चाहिए होता है, which I was not looking for at the beginning of making these YouTube videos. And if possible, you can at least
try to get a tripod or a selfie stick. But most of all, I recommend you or I advise you to at least learn something about editing skills, or and to have some creative ideas to make your videos, or else having a costly or expensive gadgets cannot, you can't become a YouTuber or make a good YouTube videos. So editing skills is must, you must know how to edit. और फिर ये छोटा छोटा चीज़ होता है जैसे कि थंबनेल्स और आपका ये डिस्क्रिप्शन ऐड करना, फिर टाइटल ऐड करना. फॉर दैट यू हैव टू at least know how to write your description or your title properly. उसके लिए तुमको पढ़ना ज़रूरी होगा. You have to know how to read and write. So everything is needed. फिर और most importantly, ऐसा नहीं है कि 10 वीडियोस 4 वीडियोस डाल के तुम डायरेक्ट यूट्यूबर बनेगा बोल के नहीं है. ओके वेल फाइन, आपका कंटेंट ठीक है और यू आर ए गुड कॉमेडियन और आपका कंटेंट ठीक होने से within a month or within a day your videos can get viral and become, I mean, monetization हो सकते तेरा videos. But एक दो बार videos डाल के जहाँ तहाँ से videos collection करके तेरा YouTube channel में डाल के तुम YouTuber नहीं बन सकता है. You can't get do well for the monetization. You have to have the consistency to upload a good content videos. और myself शुरुआत से लेके अभी तक all of us, we will all wait for like हम लोग का subscriber 1000 1k कब होगा बोल के we all used to wait for it. And then after gaining 1k subscribers हम लोग का एक होता है एक हम लोग का interest low हो जाता है and we don't, some of us even leave that passions or that interest of making YouTube videos. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. Even after getting 1k subscribers, YouTube से monetization approval के लिए लेट हो सकता है. So for that you have to be patient enough to wait for the approval, और आपका interest को और बढ़ाते जाना चाहिए और अच्छा वीडियोस डालते रहना चाहिए. अगर मैं कुछ चीज़ बताने भूल गई हूँ, checking if it's working or not. अगर if I have forgotten something to say it here, then आप लोग comment section में comment कर सकता है, क्योंकि because even I am also like you guys who is trying her best to be a good YouTuber and to upload a good content. So whatever I have said in this video is about my experience or about the about the experience जो नया है YouTube channel खोल के और जिसको YouTube videos बनाना है. So for that only, I hope my experience and whatever my views are, I hope it will be useful for them. So I hope you guys got something out of this video. This was for today's video. Thank you so much. And those who are new to my channel, do subscribe, turn on the notification bell so that you may never miss my latest updates. Till then, bye bye, take care. See you in my next video.